नेक्स्ट हम देखेंगे थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या है, देखो। लेट G be a cyclic group of order n. G is equals to generated by A. Then A raised to S in G generates a cyclic subgroup of G of order n divides D, where D is the greatest common divisors of n and S. थ्योरम देखो फिर से एक बार मैं रीड करती हूँ। थ्योरम का मतलब क्या है वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में प्रूफ करते हैं। तो देखो पहले क्या दिया है, लेट G बी द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n. That means G is equals to generator of A. Then A raised to S in G generates cyclic subgroup of G of order n divides D. यहाँ पे देखो ये cyclic subgroup है of G of order n divides D, where D is the GCD of n and S. देखो प्रूफ कैसे करते हैं। तो पहले क्या है, लेट G be the cyclic group of order n. कंसिडर यहाँ पे a रेस टू s दिया है, उसको हम b कंसिडर करेंगे। कंसिडर b इज इक्वल्स टू a रेस टू s and it is a cyclic subgroup of G. That means H is a cyclic subgroup, generates a cyclic subgroup. Therefore H से हमने subgroup को H डिनोट किया है और it generates a, therefore it can be written as triangular brackets. Let order of H is equals to m consider किया है, where H is equals to b square, b cube up to b raised to m, which is the identity E. M is the smallest power of B. Smallest power of B, which is belongs to identity E. Now B is equals to a raised to s है और a raised to s which is raised to m, that means a raised to sm, and which is equals to E, because here is identity elements है. But order of A which is equals to n, hence n divides sm, and let D दिया है, D is the GCD of n and s. ये थ्योरम में है। Here theorem में दिया है D is the GCD of n s, and we can write n is equals to suppose dx and s is equals to dy. ये हमने जो फर्स्ट GCD कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स के जो थ्योरम्स में देखा था, अगर d इज इक्वल्स टू GCD ऑफ एन एस होता है तो ये इसे कंसिडर किया जाता है। n इज इक्वल्स टू dx, x और y सम कॉमन इंटीजर्स, then x and y do not have common factor. X and y do not have common factor. That means xy is equals to 1. GCD of xy is equals to 1. Now n divides here, n divides sm है, therefore n की वैल्यू हम पुट करते हैं dx विच इज डिवाइड s की वैल्यू डालेंगे dy m, यहाँ पे dd कैंसिल हो जाएगा तो x डिवाइड्स ym आ जाएगा। यहाँ हियर देखो GCDs ऑफ xy इज इक्वल्स टू 1 है वैल्यू,
इसलिए हम y की वैल्यू 1 डालेंगे तो x डिवाइड्स m आ जाएगा. Also here b raised to x यानी कि a raised to sx which is equals to a raised to dyx and dx, that means ny, and which is equals to identity e. Therefore b raised to x is equals to e आ जाएगा and therefore m divides x आ जाएगा and hence m is equals to x, that is m is equals to n divides d. ये डिवाइड्स डिवाइड्स के फॉर्म में ये हमने फॉर्मूला लिखा है. m is equals to n divides d. n divides d. तो ये हुआ थ्योरम नंबर 4. थ्योरम ने क्या किया है, हमने फर्स्ट यहाँ पे देखो जो थ्योरम में दिया है b इज इक्वल्स टू a रेस टू s और h इज इक्वल्स टू जनरेटर ऑफ b किया है. ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू सपोज m कंसिडर किया है तो m इज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ b, दैट मीन्स इट इज अ गिव्स द वैल्यूज ऑफ e and b is equals to a raised to s which is raised to m, that means a is equals to a raised to sm which is equals to e आ जाएगा. अगेन ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, देन n डिवाइड्स sm. यहाँ पे d इज इक्वल्स टू gcd ऑफ ns. n की वैल्यू dx डाली है और s की वैल्यू dy डाली है. x एंड y डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर्स, देन gcd ऑफ xy इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. n डिवाइड्स sm, देन n की वैल्यू और s की वैल्यू यहाँ पे डाली है हमने और वैल्यूज पुट करके हमने ये फाइंड आउट किया है. m इज इक्वल्स टू x, दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू n डिवाइड्स d. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फाइंडिंग जनरेटर्स ऑफ zn. फाइंडिंग जनरेटर्स ऑफ zn. तो उसमें कोरोलरीज है दो, पहले वो हम देखते हैं. फर्स्ट कोरोलरी, let g is equals to generators of a and order of g is equals to n, then generators of a raised to m is equals to g if and only if m n is equals to 1. तो प्रूफ देखो, यहाँ पे क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल्स टू n दिया है and therefore there is only one subgroup of order n. There is only one subgroup of order n. Let subgroup h is equals to a raised to m, then ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल्स टू n डिवाइड्स d, जो ऊपर के थ्योरम में हमने देखा था, and d is equals to gcd of mn. Here h is equals to g है if and only if h यानी कि n डिवाइड्स d which is equals to n आ जाएगा. g की वैल्यू n है, ऑर्डर ऑफ g is equals to, यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ h is equals to ऑर्डर ऑफ g. तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट किए हैं. तो यहाँ पे देखो ये n कैंसिल हो जाएगा तो d की वैल्यू 1 आ जाएगी और d की वैल्यू 1 है, देयरफॉर mn आल्सो 1 आ जाएगी. तो ये हुआ करोलरी फर्स्ट का प्रूफ. सेकंड करोलरी देखते हैं. करोलरी नंबर 2, an element
m bar in Zn plus n is generator of Zn if and only if mn is equals to 1. GCD of mn is equals to 1. प्रूफ में देखो क्या करना है हमें. And elements m bar in Zn plus n is the generator of Zn if and only if GCD of mn is equals to 1. तो यहाँ पे देखो Zn दिया है. Zn की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 बार, 1 बार, 2 बार अप टू n माइनस 1 बार आ जाएगी. Then let h is equals to generators of m bar. Here from above theorem, order of h is equals to n divides d and GCD of d is equals to GCD of n. ये तो फॉर्मूला है. यहाँ पे देखो h is equals to Zn आ जाएगा. Here also वैल्यूज हम पुट करेंगे. h की वैल्यू है n बाई डी और Zn की वैल्यू है 1, यानी कि n बाई डी विच इज इक्वल्स टू Zn इज इक्वल्स टू टोटल n आ जाएगा. तो यहाँ पे n also ये कैंसिल हो जाएंगे तो d की वैल्यू 1 आ जाएंगी इफ एंड ओनली इफ mn इज इक्वल्स टू 1. सेम है अबो थ्योरम. फर्स्ट करोलरी और सेकंड करोलरी सेम है. नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं. थ्योरम नंबर 5. ये कोरोलरीज हमने देखे थे. अगर थ्योरम नंबर 5 देखते हैं. क्राइटेरियन ऑफ a raised to I which is equals to a raised to j. Let a be an element of group G if a has infinite order then all distinct powers of a, all distinct power of a are distinct elements of G. If a has finite order n, then generators of a is equals to a square, a raised to n minus 1 and a raised to I is equals to a raised to j if and only if n divides I minus j. तो ये इतना बड़ा थ्योरम है. तो उसमें देखो हमें क्या करना है. पहले थ्योरम को एक बार लिख करते हैं. Criterion of a raised to I equal to a raised to j. Let a be an element of group G and if a has infinite order बोला है यहाँ पे देखो infinite order है, then distinct powers of a are distinct elements of G. If a has a finite order then generator of a equal to a square up to a raised to n. finite है इसलिए इसकी वैल्यूज हम काउंट कर सकते हैं. and a raised to I equal to a raised to j if and only if n divides I minus g. तो पहले क्या है? a has infinite order है. तो if a has infinite order है then a raised to n which is equals to e. n होगा पॉजिटिव नेगेटिव. we have since a raised to I which is equals to a raised to j, a raised to I which is equals to a raised to j. यहाँ पे I minus j करते हैं.
विच इज इक्वल्स टू ई आ जाएगा. अगेन I माइनस जे विच इज इक्वल्स टू 0. अगेन I इज इक्वल्स टू जे आ जाएगा. Therefore all distinct power of A are, therefore all distinct power of A are distinct element of G. Now assume that order of A which is equals to mod of A and which is equals to n. That means A raised to n is equals to E. And we have to prove that generators of A which is equals to E, A square up to A raised to n minus 1. ये हमें प्रूफ करना है. देन ये जो एलिमेंट्स है E, A square up to A n minus 1 are distinct if A raised to I is equals to A raised to J with 0 less than or equals to J, less than equals to I, less than or equals to n minus 1. यहाँ पे 0 दिया है. J और I lies between 0 to n minus 1. Then A raised to I is equals A raised to I minus J is equals to E आ जाएगा. But this is contradicts to n. But this contradicts the fact n. That means A raised to n is equals to E. Now suppose A raised to k be any element of generators A. Then here we use the division algorithm. By division algorithm, their existent Q and R belongs to Z such that here k is the smallest positive integer. Then k is equals to Qn plus R आ जाएगा, where R is lies between 0 to n. Where A raised to k is equals to A raised to Qn plus R आ जाएगा. That means A raised to Qn into A raised to R. That means A raised to Q into n, A raised to R, where A raised to n into Q A raised to R. Here A raised to n E raised to Q 1. Here A raised to R आ जाएगा. That means A raised to k is equals to A raised to R आ जाएगा. A raised to R, where A raised to k is also belongs to A square up to A n minus 1. And therefore generators of A is equals to A square up to A n minus 1. So ये हुआ. Again if A raised to I which is equals to A raised to J implies A raised to I minus J which is equals to E. Again we use division theorem. Again by division theorem also there is exist Q and R belongs to Z such that I minus J which is equals to Qn plus R, where R is lies between 0 to n. Then A raised to I minus J which is equals to A raised to Qn plus R. Then A raised to I minus J क्या है? E है. Again A raised to Q और n की वैल्यू 1 आ जाएगी तो E is equals to A raised to R आ जाएगी. And therefore
I minus j, which is equals to q dot n. That means n divides I minus j. And if n divides I minus j, then I minus j, which is equals to nq. That means q is belongs to z. q is belongs to z आ जाएगा. And therefore a raised to I minus j, which is equals to a raised to nq, which is equals to a raised to n क्या है e raised to q, that means value e. And therefore e की value 1 है, a raised to I, which is equals to a raised to j आएगा. Hence proof. इसका प्रूफ बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, लेकिन इजी है. देखो मैं फिर से बताती हूँ यहाँ पे हमने क्या क्या किया है. तो जबकि ए हैज इनफाइनाइट ऑर्डर होता है तो देन डिस्टिंक्ट पावर ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ जी हमें प्रूफ करना है. नेक्स्ट, अगर ए हैज फाइनाइट ऑर्डर है तो जनरेटर ऑफ ए इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ ए रेस टू आई इक्वल टू ए रेस टू जे एंड एन डिवाइड्स एन आई माइनस जे. तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ किया है यहाँ पे. इफ ए हैज इनफाइनाइट ऑर्डर है तो ए रेस टू एन इज ई की वैल्यू है, ए रेस टू आई इक्वल टू ए रेस टू जे, ए रेस टू आई माइनस जे ई आ जाएगा. Therefore, I minus j equals to 0, तो I is equals to j आ जाएगी. That means all distinct power of A are distinct elements of G. Now suppose अगर A की वैल्यू फाइनाइट ऑर्डर में है तो हम क्या करेंगे. ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू सपोज फाइनाइट ऑर्डर है तो n कंसिडर करेंगे. एंड टू प्रूव दैट जनरेटर ऑफ A इक्वल टू ई ए स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है. तो इसके लिए हम डिवीजन एल्गोरिदम यूज करते हैं. डिवीजन एल्गोरिदम दो टाइप से यूज करना है हमें. अगर a raised to k is any elements of a, then k equal to qn plus r. a raised to k equal to a raised to this means के वैल्यू a raised to r आ जाएगी. a raised to k equal to a raised to r है, that means a raised to k is belongs to e a square. Then generators of a equal to e a square up to a raised to n minus 1. If a raised to I equal to a raised to j है, which is implies that a raised to I minus j equals to e. Again by division theorem there exists q and r belongs to z such that I minus j, which is equals to qn plus r. तो a रेस टू किया है और उसका आंसर हमने फाइनली सॉल्व करके a रेस टू आई इक्वल टू a रेस टू जे हेंस प्रूफ ये हमने सॉल्व किया है. ध्यान में रखना है हमें इस थ्योरम में हमने डिवीजन एल्गोरिदम यूज किया है. यहाँ पे हम नेक्स्ट करोलरी देखते हैं. करोलरी तो यहाँ पे देखो, लेट ए बी एन एलिमेंट of group G, show that mod of A equal to n, A raised to k is equals to E. तो प्रूफ में देखो क्या करना है हमें. So A be an element of group G, show that mod of A equal to n, A raised to k equal to E. That means we have to show that A divides k. K is some integer. That means n divides k. That is n divides k. Then A raised to k is equals to E है. That means A raised to k is equals to A raised to 0 आ जाएगा. And we know that if A has finite order,
finite order, then generators of E is equals to a square up to a raised to m minus 1. ये हमने अभी जो थ्योरम देखा है उसमें देखा है. And a raised to I is equals to a raised to j है. That means n divides I minus j. Now put I is equals to k and j is equals to 0. तो यहाँ पे हम I इक्वल्स टू के और j इक्वल्स टू 0 पुट किया तो k माइनस 0 दैट मीन्स n डिवाइड्स k आ जाएगा. और n डिवाइड्स k है तो n मीन्स इट इज अ मॉड ऑफ a which is also divides k. Hence proof. Next corollary. Let a be an element of order n in a group G let k be the integer, k be an integer, then first a raised to k which is equals to a raised to GCD of nk, and second a raised to k, sorry, mod of a raised to k which is equals to n divides GCD of nk. ये दो पार्ट हमें प्रूफ करने हैं. तो पहला प्रूफ करते हैं हम. तो पहला पार्ट लेट GCD of nk which is equals to d है. That means that is d divides n and d divides k, and d divides k, d divides k. And to show that k is equals to d into r, where r is belongs to some integers z. So first क्या है, to we have to show that a raised to k is equals to a GCD of n k. That means a raised to k which is a subset of a raised to GCD of n k and a raised to GCD of n k which is also subset of a raised to k. Both equal, a raised to k equal to a raised to GCD of nk, both are equal. That means a raised to k is the subset of this, and this a raised to GCD of nk is also subset of this, and both are subset of each others, then they are equals. So here we know k is equals to dr. That means a raised to k which is equals to a raised to dr, and which is a raised to k which is equals to a raised to d r. And that means generators of a raised to k is a subset of a raised to d. And d is the क्या? D is what? GCD of nk. When there exist xy some integers, d is equals to nx plus ky. That means a raised to d is equals to a raised to nx plus ky. That means a raised to nx into a raised to ky. That means a raised to n x, a raised to k y. So a raised to d which is equals to a raised to n क्या है हमारा e है, तो e raised to x, a raised to k
y, सिंस यहाँ पे लिखते हैं a raised to n is equals to e. Again e into a raised to k raised to power y. Therefore a raised to d, which is equals to a raised to k, which is raised to y. That means a raised to d is a subset of a raised to k. तो ये हुआ सेकेंड पार्ट, सेकेंड करते हैं, और यहाँ पे ये फर्स्ट है. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a raised to k is a subset of a raised to d, and a raised to d is a subset of a raised to k. That means a raised to k, which is equals to a raised to d. And d क्या है? d is our GCD of nk. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ. नाउ हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना है. सेकंड क्या है हमारा? then mod of a raised to k, which is equals to n divides GCD of nk. तो ये हमें प्रूफ करना है. So we have to first prove that we first prove that n divide GCD of nk है. If d is the any divisor of n, then a raised to d, which is equals to n divides d. Okay, that means a raised to d, which is raised to n divides d, which is equals to a raised to n आ जाएगा, because dd cancel हो जाएगा, और a raised to n क्या है? e है. And hence a raised to d is less than or equals to n divides d. A raised to d is less than or equals to n divides d. To show that n divide d is smallest if any positive integer less than n divides d, then a raised to d, which is raised to I, which is equals to e. Then mod of a raised to d, which is equals to n divides d. Then mod of a, which is equals to mod of generators of a. Therefore a raised to k, which is equals to a raised to k. A raised to k, that means a raised to GCD of nk. And therefore a raised to k, which is equals to a raised to GCD of nk. And therefore a raised to k, which is equals to n divides GCD of nk. ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ. नेक्स्ट कोरोलरी देखते हैं. कोरोलरी ये चैप्टर में टोटल थ्योरम ही है, एग्जांपल्स बहुत कम है और बहुत लेंथी चैप्टर है.
इम्पोर्टेंट चैप्टर है. In a finite cyclic group, the order group, the order of an element divides order of the group that is mod of A equals to mod of G. Mod of A dot mod of G. In a finite cyclic group, the order of an element divides order of the group. ये divides है. Order of A divides order of G. तो प्रूफ में देखो, let G be a cyclic group, G be a finite cyclic group generated by A belongs to G. Then G is equals to A raised to N belongs to Z, A raised to K belongs to G. Then एक करोलरी पिछली की तरह एक करोलरी देखी है हमने, A raised to K which is equals to N divides GCD of NK. ये यहाँ पे ऊपर हमने देखा है. यहाँ पे ये कोरोलरी हम यहाँ पे यूज करेंगे. दैट मीन्स A raised to K which is equals to, इसकी वैल्यू क्या है, R है. यानी कि GCD of NK which is equals to N divides A raised to K. That means N divides R आ जाएगी. A raised to K is equals to what, R है. तो यहाँ पे हमने GCD of NK N divides R किया है. That means the order of an element of G divides order of the group G. That means order of A divides order of G. N means order of A, which is divides R. R, that means order of G. एक करोलरी देखते हैं, लास्ट वन, और वीडियो को हम स्टॉप करते हैं. एक लास्ट वन करोलरी है. देखो, लेट G be a group and A belongs to G such that A is equals to N, then A raised to I is equals to A raised to J, if and only GCD of Ni which is equals to GCD of Nj, and mod of A raised to I is equals to A raised to J, if and only if GCD of Ni which is equals to GCD of Nj. यहाँ पे देखो, let G be the group and A belongs to G such that A is equals to N, then A raised to I equal to A raised to J, if and only if GCD of Ni is equals to GCD of Nj, and mod of A raised to I equal to mod of A raised to J, if and only if GCD of Ni equal to GCD of Nj.
तो यहाँ पे देखो, प्रूफ करते हैं। सपोज a raised to I which is equals to a raised to j, that means a raised to gcd of ni which is equals to a raised to gcd of nj. That means a of gcd of ni which is equals to mod of a raised to gcd of nj. ये जो ऊपर का थ्योरम है, फर्स्ट कोरोलरी जो देखी है हमने, वो हमने यहाँ पे यूज किया है। दैट मीन्स n divides gcd of ni which is equals to n divides gcd of nj। इसमें भी हमने कोरोलरी यूज किए हैं, एंड देयरफॉर यहाँ पे n n n कैंसल हो जाएगा, तो gcd of ni which is equals to gcd of nj। Conversely, gcd of ni which is equals to gcd of nj, that means a raised to gcd of ni which is equals to a raised to gcd of nj। Okay. And which is also equals to a raised to I, a raised to j by a raised to k which is equals to gcd of nk। ये थे थ्योरम हमने यहाँ पे यूज किया है। सपोज a raised to I which is equals to a raised to j, that means a raised to I which is also equals to a raised to j, then by corollary a raised to I which is equals to a raised to j which is also equals to gcd of ni equal to gcd of j। ये हुआ हमारा proof। तो इस वीडियो में हमने टोटल थ्योरम और कोरोलरीज देखे हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। तो अभी इस वीडियो को मैं स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।